हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एमआईएस की एडवांटेजेस क्या है? तो एमआईएस की जो फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग। अब इस बात को समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लानिंग कैसे इम्प्रूव होती है। हमने देखा कि एमआईएस जनरली यूज किया जाता है डेटा कैप्चरिंग के लिए। तो डेटा कैप्चर करके डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके डेटा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो दीज इंफॉर्मेशन गिव्स द इनसाइट अबाउट द डेटा। इन इंफॉर्मेशन की वजह से क्या मिलता है, इनसाइट्स अबाउट द डेटा, मतलब डेटा के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, किस तरह की ट्रेंडिंग है, सारी चीजें हमें डेटा के बारे में पता चलती है, जिसको बोलते हैं डेटा इंसाइट्स। तो एक बार आपके हाथ में डेटा इंसाइट्स लग गया, आपके हाथ में मार्केट ट्रेंड है, आपके मार्केट के बारे में समझ रहा है, या आपको जो कुछ भी आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज है उनके बारे में पता लग रहा है बाय प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एज ए इंफॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, बेटर प्लानिंग कर सकते हो। तो दिस वे एमआईएस improves the quality of the planning. In the same way, okay, if you have an insight over the data, you can decide what action I have to take. ओके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी एक्शंस लेनी है, कौन सी एक्शंस नहीं लेनी है, कौन से सेक्टर्स हैं जहां इंप्रूवमेंट करनी है। तो सिमिलरली इट हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग। तो एमआईएस की दो एडवांटेजेस हो गई कि आप डेटा को प्रोसेस कर लेते हो, डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, दिस इंफॉर्मेशन look out as a insight over the data, and these insight over the data help us in a planning that improves the quality of the planning. At the same time it help us to take a decision, therefore it is help in decision making also. The next is a operational efficiency. What is operational efficiency? If you have a data, okay, though it is software, it can process the data faster as compared to manually processing. If you get the information, okay, you can take decisions so early, okay, or fast, okay. So this way you can sorry, if you have a data, you have made a decision so early, okay, or fast, okay, you can take actions, okay. This action lead to the increase your operational efficiency. Then you will have a good control and the supervision, okay. Whenever your manager asks or the upper management asks for the any reports, you can produce the report within a second or with a few click, okay. So this lead to the improvement over the control and the supervision of the data. And similarly whatever the reports you are generating, these reports can be communicated with the external or internal departments. The next is limitation, or we can say the disadvantages of the database. Very first, it is software, we have to purchase it. So for the first time it can be considered as a expensive, but it is worth to have it for the large business organization. For the small business organization it is really expensive, okay, not worth. So not a solution to all problem, it is a not solution, okay. If you are having a MIS your organization, it means it is not like that you don't have to do anything, okay. At least you have to do some sort of the inputs and some you have to perform some sort of the procedures, okay. So MIS is not a complete solution that you cannot imagine like this, once I have installed the MIS, okay, then all the problem will gonna solve it, okay. No, you have to do some task. Then can't meet the special demands, okay. There are some special demand, okay. Every exceptions based for designing cannot be done in MIS, okay. Then data dependent, obviously whatever the data will be input, okay, on the basis of the processing of those data will get the output, okay. So it is the data independent, sorry, dependent, not independent, it is data dependent. The ignores the qualitative information, focus on only quantitative information. Yes, MIS only focus on the quantitative
information. It represents the how many numbers of the users, okay, how many have filled the form, how many have not filled the form, okay, how many customers likes the product, how many customer dislike the product, how many customer rate the product 5 out of 5, okay, how many rate the product 1. So it deals about the mostly quantitative data rather than the qualitative data. Okay, so this is one of the limitation or the disadvantage of the MIS. So that's all with the advantages and disadvantage of the MIS. Okay, if you loved the video, please like it, share with your friends, and subscribe the channel if yet not. Thank you so much.